The topic I'm going to start with today is healing of oral wounds. The contents would be we'll be discussing about regeneration, repair, general factors that can affect the healing of oral wounds, healing of biopsy wounds, healing of extraction wounds, the complications that can be involved, the healing of fracture, the complications of fracture healing, replantation, implants, conclusion, and followed by references. Starting with factors affecting healing of oral wounds. So, the word healing, first of all, refers to the replacement of the damaged tissue by the living tissue. Healing का मतलब ये है कि कोई state of the tissue which has got altered, if that can get back to the original state, original functional state, that process is called as healing. अब healing दो तरह से हो सकता है कि जो चोट थी या जो wound था, that created a distance or a wider gap. So that in that case, the healing would take place by secondary intention, where there is a tissue loss and where the wound edges cannot be approximated, cannot be opposed. For example, मैं दो situation लेती हूँ एक जगह पे, जैसे कि एक normal tissue था, यहाँ पे wound हुआ, and because they are very close to each other, so they will get approximated on their own, and that will heal by primary intention. That is, there is no granulation tissue that is being formed. कोई एक extra additional adhesive tissue अपने को नहीं चाहिए जो उसे जोड़ेगा. लेकिन secondary intention के केस में क्या होता है, wound edges we are approximating it. We will have to make efforts, and और द बॉडी विल मेक एफर्ट, और जब बॉडी एफर्ट मारती है तो वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म करती है, एंड दैट ग्रैन्युलेशन टिश्यू इज द एडिशनल टिश्यू दैट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द टू एजेस ऑफ द वुंड टू कॉज द वुंड कॉन्ट्रैक्चर, ताकि वुंड स्क्वीज आउट हो जाए. दिस इज कॉल्ड एज हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, राइट? So here we can see the pictures. This is primary intention, this is secondary intention. यहाँ पे सूचर्स देंगे, बहुत फाइन स्कार आएगा, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है. विदाउट एनी स्कारिंग द टिश्यू विल गेट हील्ड. सेकेंडरी इंटेंशन के केस में एवरी टाइम देयर वुड बी अ स्कार फॉर्मेशन. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल वुंड्स. क्या क्या हो सकते हैं? बायोप्सी की वजह से वुंड्स हो सकते हैं, एक्सफोलिएटिव सॉइटोलॉजी की वजह से, ओरल अल्सर्स हो सकते हैं. एनीथिंग दैट इज कॉजिंग द ब्रीच इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एपिथेलियम और द म्यूकोजा वुड बी क्लासिफाइड एज वुंड, एंड सच रीजंस कैन बी. ऑर्थोडोंटिक वायर्स हैं, उसकी वजह से वुंड्स हो सकते हैं. एक्सट्रैक्शन की जो वुंड्स रह जाते हैं वो हो सकते हैं. कुछ मेजर जॉ फ्रैक्चर्स हैं वो हो सकते हैं. ठीक है. oral lesions of dermatosis can be there. Vesicle formation जो होता है basically, और dermatosis में we can count pemphigus, pemphigoid. Then there can be anu. A lot of wounds can be, well, like diseases can be there that can have a wound-like appearance. The factors that affect the healing of wound. अब oral wound हमेशा एक जैसा heal नहीं होगा. It can be affected by multiple conditions. जैसे वुंड का लोकेशन कहाँ पे है, फिजिकल फैक्टर्स, सर्कुलेटरी फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, hormonal factors, miscellaneous factors. We'll discuss them one by one in detail. So talking about the location of the wound, there are places which receive a very good vascular supply, and the wound there would heal rapidly क्योंकि blood would come rushing to the wounded area. Second thing is that immobilization also helps in rapid healing. For example, the corner of the mouth that gets delayed healing, that shows delayed healing, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कोई भी mobility is there at the corners of the mouth, that would result in the delayed wound healing. And वहीं पे कोई area अगर immobilized है, that would heal faster. So in a lot of cases, we try to immobilize the wound as much as possible so that the wound can be healed faster. Physical factors, a severe trauma to the tissue will show healing. Local temperature increases the rate of healing क्योंकि circulation increase हो जाता है. Temperature increase हुआ, that would increase the circulation.
and the healing will get accelerated. Similarly, hypothermia के cases में healing would get delayed. एक्सरे रेडिएशन, लो डोज में अगर एक्सरे है तो लो डोज स्टिमुलेट करता है हीलिंग प्रोसीजर, बट अगर हाई डोज में है इट वुड सप्रेस द हीलिंग. Anemia and dehydration, they also report to delayed wound healing. दोनों के केस में ही, एनीमिया के केस में we have low blood count, and in case of dehydration we have low blood volume, पानी है नहीं, so that would also decrease the healing. The nutritional factors responsible can be hypoproteinemia, that would also delay the healing. It will slow down the new fibroblast proliferation and multiplication in the wounds. The scurvy would also delay the healing because there is always lack of vitamin C की वजह से होता है ना scurvy, vitamin C deficiency से. And vitamin C responsible किस लिए है? कोलेजन फॉर्मेशन के लिए. अगर कोलेजन फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो वुंड हीलिंग कैसे होगी? So that will cause an interruption in the regulation of collagen formation of normal intercellular ground substance of the connective tissue.